Hello students, I am SANJIT Kumar Giri. This is my YouTube channel. If you see the next videos, then please subscribe my channel. Today I have discussed about wavefront and types of wavefronts. It is defined as the locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase at a given point instant. What a particular ସମୟରେ ଯଦି ସମାନ ଫେଜ୍ରେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିୟମର ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ. The next point is the shape of wavefront depends upon the shape of a source of disturbance. जो source रू wavefront तैयारी होइछे सेही wavefront रो आकारटा सेही source रो आकार ऊपर डिपेंड करिवो. Then the next one is types of wavefronts. There are three types. First one is spherical wavefront. A spherical wavefront is produced by a point source of light because the locus of all such points which are equidistant from the point source is a sphere. Spherical wavefront produced by a point source of light. गोटे पॉइंट लाइट रो गोटे सोर्स जोटा गोटे पॉइंट आकार रे ता द्वारा स्फेरिकल वेवफ्रंट ता तैयारी होता कारण लॉकस रो समस्त पॉइंट्स माने जो समान दूरता रे रुहंती पॉइंट सोर्स पाखर जहाँ को हमें गोटे एग्जांपल स्फीयर आकार रे नहीं परिबा सेटा देखिया पई गोटे स्फीयर बॉडी. देन द नेक्स्ट वन इज सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. Cylindrical wavefront is produced by a linear source of light. गोटे लाइन रे इस cylindrical wavefront रा तैयारी है because all the points which are equidistant from a linear source lie on the source of a cylinder. समस्त points माने समान दूरता रे source और cylinder रा जो source ऊपर अवस्थित होता है. Then the next one is plane wavefront. A small part of spherical or cylindrical wavefront originating from a distant source of light will appear a plane. गोटे छोट भाग spherical बा cylindrical wavefront रो जोटा गोटे सोर्स पाखरु लाइट सोर्स पाखरु गोटे प्लेन भावर रे देखा जाय थाय सेटा को हमें प्लेन wavefront मध्ये कहि. Then the next one is Huygen principle. It states that each source of light is a center of disturbance from which waves spreads in all directions. प्रत्येक लाइट सोर्स गोटे गोटे सेंटर डिस्टर्बेंस रो सेंटर जोठू वेव्स समस्त दिगरे स्प्लिट ही थाए डिफरेंट डायरेक्शन ले सब मूव कर थाए. All particles equidistant from the source. समस्त particles माने समान दूरता रे सोर्स पाखरु थाती and vibrating in the same phase समान फेज रे वाइब्रेट करती एवं सेही सरफेस ऊपर रुहती जहाँ को हमें वेव फ्रंट कहि परिबा. The next one is every point on a wave front is a source of new disturbance. प्रत्येक पॉइंट ऊपर every point on a wave front ऊपर प्रत्येक पॉइंट होचंती सोर्स रो गोटे गोटे नुआ डिस्टर्बेंस जहाँ द्वारा सेकेंडरी वेवलेट सब प्रोड्यूस होता है. Only forward envelope and closing the tangents at the secondary wavefront at an instant give the new position of the wavefront. because the secondary wavelet ऊपर जो टेंजेंट टा जेकोनोसी समय रे सेटा गोटे wavefront रो नुआ पोजीशन तैयारी करता है. Then the next one is coherence. A wave that appear to be a pure sine wave for infinitely large period of time. गोटे wave जोटा कि गोटे sine wave भाव रे बिहेव करे जार
पीरियडटा टाइम पीरियडटा इनफाइनाइट ही थाए ताको आमे कोहेरेंस कहते. In such a wave there is a definite relationship between the phase of wave at a given time. से कुछ यही वेव क्षेत्र रे जो फेज रिलेशन टा थाई वेव आउट टाइम भितर सेटा डेफिनाइट ही थाए गोटे निर्दिष्ट वैल्यू ही थाए एंड एट ए सर्टेन टाइम लेटर फॉर एट पॉइंट एंड एट सर्टेन डिस्टेंस अवे गोटे किछि समय परे से पॉइंटटा किछि दूरता दूरे जाए. The next point is coherence describe all properties of the correlation between physical quantities of a single wave. गोटे गोटे वेव मानकर जो फिजिकल क्वांटिटीज मानक भितर जो रिलेशनटा आम ये कोहेरेंस द्वारा जापर. ये कोहेरेंस दुई प्रकार. There are two types of coherence. One is temporal, then next one is spatial. First one is today first discussed about the temporal coherence. It is a measure of relation between the phases of a wave at different points along the direction of propagation of wave. ये temporal coherence द्वारा आमे मेजर करि थाउ different point रे wave रो phase. Then the now explain the temporal coherence. Consider a light wave traveling along x-axis. First we are considering प्रथम आम गोटे कनसीडर करबा गोटे लाइट वेव जोटा एक्स एक्सिस रे जीवो लेफ्ट एंड बी आर द टू पॉइंट्स ता ऊपर आमे से वेव ऊपर दुटा पॉइंट नेले गोटे ए आ गोटे बी पॉइंट. ए पॉइंट रे फेज होसी फाई ए बी पॉइंट रे होसी फाई बी जे कोनसी समय. Then phase difference between these 2 points A and B is given by phase difference. Just the symbol of phase difference is delta phi. Delta phi equal to हम लिख परिबा 5A minus 5B. जदि phase difference ता समय ऊपर डिपेंड करिवो नाही ताले से वेव टाको टेम्पोरल कोहेरेंस कहि परिबा. If delta phi is independent of time, then the wave is said to be temporal coherence. The average time interval for which the field remains sinusoidal. जदि गोटे एवरेज टाइम व्यवधान रे हाराहारी समय व्यवधान रे फील्डटा जदि सिनुसॉइडल हुए ताको आमे कहि परिबा कोहेरेंस टाइम बा कहि परिबा टेम्पोरल कोहेरेंस ऑफ लाइट वेव जाको आमे सिंबल टाउ बोली कहू. But आमको पूर्वर जना अछि we know that velocity equal to distance by time. So place the distance equal to velocity into time. The distance for which the field is sinusoidal. If the field is sinusoidal, in that case the average interval of time is tau. Then the distance is denoted by L. L equal to the c into tau. So L equal to tau c. That c is the speed of light because a wave is traveling with the in free space the velocity of light. And L is the distance for which field is sinusoidal. Then next one is the spatial coherence. Spatial coherence is the phase relation between the radiated field at a different point in the space. Space or different point रे radiation field by जो फेज रिलेशन टा हमें बाहर करबा तो हमें कहि परिबा स्पैटियल कोहेरेंस. ए स्पैटियल कोहेरेंस द्वारा भी मध्य हमें स्पेस रे जे कोनोसी दीटा पॉइंट रो क्षमता विषय भी मध्य हमें डिस्क्राइब करि परिबा. Spatial coherence describe the ability for 2 points in space in the extent of a wave to interfere when average over time. Then the next point is the spatial coherence is the cross correlation between the 2 points in a wave for all times if wave has one value of amplitude. जदि wave रो amplitude टा 1 ही थिबो then wave ऊपर भितरे जो दीटा पॉइंट ताको भितरे क्रॉस रिलेशन टा हमें इस स्पैटियल कोहेरेंस द्वारा बाहर करि परिबा. किंतु हमें टेम्पोरल कोहेरेंस बेले गोटे लाइन ऊपर हमें दीटा पॉइंट को रोकिला. Now explaining the spatial coherence, first we consider the point A and B.
let A and B and B depends on the distance AB and temporal coherence. If it is depends on the distance between A and B, then it is known as temporal coherence. So if AB is very less than L means coherence length. If this length A length टा जदि आमे AB टा जदि L ठारू बहुत कम हबो ताले आमे कहि परिबा there will be a definite phase relation between A and B. A और B भितरे गोटे पर्टिकुलर फेज रिलेशन आमे पाई परिबा माने जदि आमे फेज रिलेशन पाई परिबा ताले आमे कहि परिबा A और B भितरे कोहेरेंस टा हाई अछि, that is high coherence between A and B. On the other hand, if AB is very greater than L, जदि AB टा बहुत अधिक हबो L ठारू, then आमे एठारे कोहेरेंस पाइबा नाही, then there will be no coherence between A and B. Now let us consider another point C. Let us consider points A and C. This is A and this is C, which are equidistant from the source S. This is the source. एटा को हम सोर्स कोइ परिबा, सोर्स सिंबल S. सेटु समान दूरतार आमे गोटे पॉइंट नेले A और गोटे पॉइंट नेले C. But all are but A and C are equidistant from the source S, but placed in the different line. If the source S is a true point, जदि actual point टा A से हितिबो, then the wave shall reach the point A and C in exact same phase. जदि actual point source रा A से हितिबो, then वेव ए पाखरे पहुँचा जी जो फेज जी फेज सी रे पहुँचला बेलू से फेज रही से रहा कहीपर परफेक्ट कोहेरेंस और स्पैटियल कोहेरेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन थ्योरी. हाइजन थ्योरी यूज करी आमे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन टाको डिराइव करिया. We know that the laws of refraction, this is also known as Snell's law of refraction. Sin I by sin r equal to mu 2 by mu 1, or it is also denoted by n2 by n1. N also is known as refractive index. So प्रथमे हमें कंसीडर करिबा गोटे वेव फ्रंट जहार नाम होचे AB is an incident wave front striking the interface xy. This is the interface. This is the rarer medium and this is the denser medium. इटा को denser medium कोई परिबा, ऊपरटा को rarer medium कोई परिबा. So बतन जो light टा incident हबो rarer medium रो denser medium. AB is the incident wavefront striking the interface xy at a point A. ई जो wavefront AB टा इटा बतन strike करूसी rarer medium रो xy interface ऊपर A point. Refractive index of medium 2, this is the rarer medium is the first medium and this is the second medium. आमे ये जो refractive second medium रो refractive index टाको आमे n2 नहीं जो rarer medium रो होची n1. Refractive index of medium 2, that is n2 greater than the refractive index of medium 1, that is n1. Rarer medium रो refractive index थारो denser medium रो refractive index टाको अधिक. जितेबले लाइट टा मूव करूचे रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को सेतेबले स्टार्टिंग पोजीशन ले से लाइट रो वेलोसिटी होचे v1. लेट v1 with the speed of light in medium 1. if it is enter in the denser medium, so the denser medium रे जितेबले लाइट टा मूव करूचे सेतेबले तार वेलोसिटी टा को हमें v2 बोली धरिबा and v2 with the speed in medium 2. But V2 less than V1 because refractive index N2 is greater than N1. So according to the Huygen principle अनुसार every point on incident wavefront AB act as a source of disturbance. ये जो हमें wavefront consider करचु सी AB wavefront ऊपरे जेकोनो सी पॉइंट ऊपरे जदि इंसिडेंट हबो ताले सेटा गोटे
प्रत्येक पॉइंट सब गोटे गोटे सोर्स डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स द टाइम इन व्हिच वेवलेट रीच फ्रॉम बी टू सी जितेबाला बी पॉइंट रू आसी सी पॉइंट रे पहुँचुची से एक्सो इंटरफेस उपरे से समय आम के देखा कारण जितेबाला रेयर मीडियम रे रोचे से तार वेलोसिटी v1 आमको जना अच्छी वेलोसिटी इक्वल टू displacement by time, so time equal to displacement is the bc and velocity is the v1, so t equal to bc by v1, that is bc equal to v1t. Then next one is the draw another this is eddy equal to also in similar case same time t equal to also eddy by v2, so eddy equal to v2t. To get a point on the secondary spherical wavelet originating from the point A on the incident wavefront. It is secondary wavefront. It आरंभ होइছে A रू शेष होइছে D रे देन आमे बर्तन कोन करबा C आउ D को जॉइन करबा जॉइन CD. Therefore CD is the एटा बर्तन हेजिबो जदि एटा तार इंसिडेंट वेव फ्रंट हेथिबो ए बी देन सीडी हेजिबो तार रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ताले हम कहि परिबा देयरफॉर सीडी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. नाउ डिवाइडिंग both the equation, so BC by AD दिटा को जदि हम डिवाइड कर दबा ताले BC by AD इक्वल टू हम पाइबा V1T by V2T. सो T कैंसिल हे जिवो हम पाइबा BC by AD इक्वल टू V1 by V2. एटा को हम इक्वेशन नंबर 1 दे दबा. ते हम वर्तमान चित्र को जिबा locate the diagram in the triangle ABC. This is the triangle ABC. This is the incident angle of incidence. So sin I equal to, we know that P by H. This is the P, this is the B, and this is the H. एटा H कोई परिबा, एटा को B कोई परिबा बेस, एटा को P कोई परिबा, एटा को हाइट H कोई परिबा. सो ए एंगल टा जेहेतु I अछि देन हमें sin I इक्वल टू लिखि परिबा P by H. एटा होचे PBC, H होचे SC, ताले BC by SC इक्वल टू sin I लिखिबा, ताले BC इक्वल टू केते लिखिबा SC sin I. पुणी हमें जो रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट आड़ को लक्ष्य करिबा दे हमें एडीसी ट्रायंगल को जिबा. एई एंगल टा होसी रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो हमें एटा हि जिवो बेस, एटा हि जिवो P, एडी हि जिवो P, एसी हि जिवो H. सो हमें एटू sin r बाहर करिबा. sin r इक्वल टू एडी बाय एसी. So implies that AD equal to SC sin r. Putting these value in equation 1, BC आउ AD रो value नहीं हमें put करिबा equation 1 रे. जेहेतु equation 1 थिला BC by AD equal to V1 by V2, ताले हमें पाई परिबा sin I by sin r equal to V1 by V2. और राइट हैंड साइड रे हमें C डिवाइड कर दबा, ऊपर भी डिवाइड कर दबा, तले भी मध्य डिवाइड कर दबा. सो हमें पाई परिबा V1 by C डिवाइडेड बाय V2 by C. ए ऊपर सीटा को हम तळ को नहीं आसीबा, तळ सीटा को ऊपर को नहीं गले हम लिख परिबा C by एटा को हम लिख परिबा C by V2 डिवाइडेड बाय C by V1. किंतु हमको जଣା अछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला velocity of light divided by speed of that medium. So but C by V1 equal to जतबेला हम रेयर मीडियम कथा कहबा C by V1 equal to refractive index n1 लिख परिबा, C by V2 equal to लिख परिबा refractive index n2. देन ए वैल्यू सब नै हमें ए ऊपर इक्वेशन ले पुट कर दबा. जदि ए इक्वेशन हमें पुट करबा तले हमें पाई परिबा sin I by sin r equal to n2 by n1. So implies that n1 sin I equal to n2 sin r. एटा को कहंती Snell's law of refraction. Then the next one is a law of reflection on the basis of Huygen theory. Huygen theory को यूज करी हमें रिफ्लेक्शन रो लॉ प्रूव करबा.
आमको जना अछि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर आमे प्रूव करबा। सो प्रथमे हमको गोटे रिफ्लेक्ट गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना पई पड़ियो जोंथरे लाइट इंसिडेंट होबा परे रिफ्लेक्ट हे जो। सो प्रथमे आमे गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नेले जो सरफेस रो नाम देले एक्स वाई। Consider a reflecting surface xy on which a plane wave front AB is incident at a point A। बर्तमान जो आमे वेव फ्रंट आमे नेलु से वेव फ्रंट रो नाम होची AB। इटा होची से सेम वेव फ्रंट AB जोटा आरंभ होईची A रु से A पॉइंट कोठी जे मीट हेची ना xy रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू द हाइजेन प्रिंसिपल आमको जना अछि जे सेही वेव फ्रंट ऊपर जे कोनोसी पॉइंट रे सब गोटे गोटे न्यू डिस्टर्बेंस हबे। अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट एवरी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। सो जदि आमे कहबा लाइट रो स्पीड ता जदि v हेतिबो ताकू b रु c को c पॉइंट को आसिया पई से रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे आ गोटे पॉइंट रे c पॉइंट रे पहुंचबा पई ताकू जदि समय t लागिबो ताले आमे कहि परिबा वेलो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो v इक्वल टू bc बाय t। सो इम्प्लाइज दैट bc इक्वल टू vt। ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस bc। वर्तमान ए जो bc को नै ए bc रेडियस को नै गोटे आमे स्फीयर ड्रॉ करिया विथ ए पॉइंट a एज द सेंटर। वर्तमान ए टाकू सेंटर करी आमे गोटे से रेडियस रे bc रेडियस रे की आमे गोटे स्फीयर तयारी करिया। वर्तमान से स्फीयर रे cd टा गोटे टेंजेंट भाव रे आमे तयारी करिया। ड्रॉ cd गोटे टेंजेंट आनिबा जार नाम दबा cd टू दिस स्फीयर। देन आमे कहि परिबा एडी जहा डीसी से एडी जहा बीसी भी मध्य से ताले आमे कहि परिबा जेहेतु एटा होस तार रेडियस बीसी अनुसार बीसी रेडियस रे आमे स्फीयर ता तयारी करछु तनो एडीटा होची वर्तमान स्फीयर रो रेडियस तनो आमे कहि परिबा एडीटा होची बीसी आ बीसी रो वैल्यू आमे पाइछु vt। ताले एडी इक्वल टू बीसी इक्वल टू vt। वर्तमान आमे दीटा ट्रायंगल को लक्ष्य करिबा। गोटे राइट एंगल ट्रायंगल नाम होची ADC। ए राइट एंगल ट्रायंगल कथा लक्ष्य करिबा आ गोटे ABC। ए दीटा जाको जति समान होंती प्रथमे फर्स्ट लोकेट द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल BAC। In that case BC equal to we get this is the angle of incidence। एटा होची angle of incidence कोइ परिबा ताले एटा को आमे लिखि परिबा। प्रथम हमकु जणा अछि sin a equal to p by h। सो एटा जो देइतिबो ताले एटा होची तार बेस एटा होची तार हाइट एटा होची p। ताले आमे लिखि परिबा sin a equal to bc by ac। सो इम्प्लाइज दैट bc टा हिजबो ac sin a। से भली आमे सेकंड ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल को जिबा ADC को जिबा ए एंगल टा AC के एंगल टा होची r जाको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोइ परिबा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोइ परिबा आमको जना अछि sin r इक्वल टू से p by h। ताले एटा हिजबो बर्तन बेस एटा p ताले AD होची p AC होची h ताले AD by AC। सो इम्प्लाइज दैट AD इक्वल टू AC sin r। सिंस जेहेतु आमको जना अछि BC टा होची AD। सो पुटिंग these values the value of BC and AD। BC value is AC sin I, AD value is AC sin R। So we get AC sin I equal to AC sin R implies that sin I equal to sin R implies that I equal to R. Hence the law of reflection is proved, that is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Thank you.